Good morning, all of you, and welcome you all in this platform of StudyIQ OPSC channel. Good morning, Rajendra. Good morning, Vijay Lakshmi. Good morning, all of you. I hope audio and video both are working fine. So today is 27th of February. We'll discuss about national international news. And as you know, power play offer open challenge 50% off for the limited time. Those who want to enroll in the foundation course, they can do that. So let's start today's session. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. तो ये kind of motivational Confucius करो जो Chinese जो अपना जानी थी philosopher. Okay, so let's start today's session. Ban on Class 8 textbook. Huge controversy regarding the judiciary corruption in the judiciary. There is a dedicated topic on that. Justice Burma will discuss about it. Expert committee on RWL. On the Supreme Court's observation, online platform to take responsibility with respect to the social media. New GDP data will include जो आपनकर revise करा जायछि 2012 थिला base year, now it's 2024. So new revisions are there. Portal to attract tech innovation. So let's start. Ban on Class 8 textbook. The Supreme Court of India ordered a blanket ban and seizure of a Class 8 social science textbook for portraying the judiciary as corrupt with selective references. So Class 8 जो NCERT, I think you know this, the new government has started rewriting the whole NCERTs. So in that whole NCERT, in Class 8 textbook of social science, portraying judiciary as corrupt with selective references. As we know, judiciary time and again सबुबले ପାଇଁ criticize करा जाउची with respect to the corruption हो, with respect to the जो selection and appointment process जोटा आपण करो गोटे OPEX system चलीची, there is no such transparency in that, and executive रो कोनोसी intervention नाही judiciary रो appointment रे. As we know, judiciary रो independence is निहाती necessary. तो से जो basic structure बोली ताको कुआ जाउची, but time and again हमें criticize करा जाउची. The court termed the depiction of a deep-rooted conspiracy and a very calculated move to undermine judicial credibility among the students. The book was published by the National Council of Educational Research and Training, an autonomous body under the Ministry of Education. So, ये जिनसे आपण जानते हैं, NCERT is the research organization, that is an autonomous body under the Ministry of Education. Ban on Class 8 textbook जदि आपण देखिबे, ये particular ये जो topic रे आपण देखिबे corruption in the judiciary it mention करा जायछि. The bench led by CJI Suryakant held the content was reckless and irresponsible, motivated and contemptuous, and capable of instilling bias against judiciary in impressionable minds. Said the narrative ignored judiciary's role in protecting constitutional morality, upholding the basic structure, doctrine, contribution to legal aid and access to judiciary. Yeah, justice. जदि आपण देखिबे judiciary रो काम कोन, judiciary रो काम होची justice system को ensure करेबा, free legal aid को ensure करेबा, and जो constitutional morality अछि, constitutional morality कोन, what is right as per the constitution. जदि हमें कहू who is the interpreter of the constitution, that is the judiciary. तो ये जो जिनस आपनकर अछि, justice CJI Suryakant held the content was reckless and irresponsible, and जदि corruption आपण देखिबे bureaucracy रे भी अछि, that is executive part. Corruption जदि आपण देखिबे legislature रे भी अछि, but intentionally that has been put in a book जोटा कि CJI तको मेंशन करूजंदी कि judiciary को गोटे kind of से जो कुआ जाउछ ना कि OPEX system transparent नाही, and judicial dynasty हमें कहूचे, judges after judges से family tree type रो से बड़ी बड़ी चलचे. तो ये सब जो criticism अछि that has been put in a particular book जोटा कि 8th class 8th standard रे. ओके, तो ये गोटे कंट्रोवर्सी अपन को चलैतला जोति पाई कि बर्तन बैन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट बुक बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ कमिंग टू द जस्टिस बर्मा का केस हम ऑलरेडी हमें डिस्कस करिछु आगुरु. ओम बिरला reconstituted a 3-member inquiry committee to examine grounds for removal of Justice Yashwant Verma. The move relates to allegation that bundles of burnt cash were discovered at Justice Verma's residence. Okay, so what basically happened? जदि आपण के फॉलो करि नथिबे, जो माने फ्रेशर फॉलो करि नथिबे, म आपण कहि रखे, जस्टिस वर्मा थिले दिल्ली हाई कोर्ट रो
जज दिल्ली हाईकोर्ट रो जज थिले तो तांको घरे किछि फायर इशू आसिला शॉर्ट सर्किट हेकी सो फायर ब्रिगेडियर this people officials they went to the official designated quarter at the time of this whole thing सेठी 10 I think 1 crore रो कैश अपन को 1 crore या 10 lakhs रो कैश अपन को मिलतला that is some are burnt cash and some are unburned so जस्टिस वर्मा को गुरु एते टंकर कैश बाहरिबा इज समथिंग और एनी पब्लिक ऑफिशियल जदि जन को गुरु 10 lakhs रो कैश बाहरुची obviously this is a matter of question so background कोन that the committee was first constituted March last year जतबे बर्न बाहरला तो immediately कोन करला जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर दिया गला इलाहाबाद हाई कोर्ट को and an independent inquiry committee was constituted under the observation of Supreme Court कहीं ना जेहेतु एटा matter of judiciary प्रथमे judiciary कहला we cannot transfer this case either to the legislature or to the आपनकर जोटा executive अछि so first we will inquiry that तो गोटे independent 3 member committee गोटे form करागला and से 3 member form करागला परे substantial evidence मिलेला कि हाँ something is happening or something is involved in this then further कौन करागला आपनकर गोटे resolution pass करागला resolution कोडी pass करा जिवो से विषय रे मैं डिस्कस करिबी so committee was first constituted March last year after demands of his removal surface reconstitution signals continuation of the constitutional removal impeachment process against a judge so this is what exactly happening. So constitutional significance देखो committee formed under the Judges Inquiry Act 1968 for investigating allegation against a High Court or Supreme Court judge. यदि आपण constitution को देखिबे संविधान को देखिबे there is no such provision with respect to the removal of a judge. There is no such provision. Why? Because if you see the constitution सेठी आपणकर केवल लिखा आइछि proved incapacity and misbehavior these are the two fundamental grounds जोटा कि जजेस मन को रिमूव करा जाई पारिबो बियॉन्ड दिस देयर इज नो सच मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट व्हाट हैपेंस जदि आपण देखिबे इफ एनी सच एलिगेशन कम इनटू सरफेस तबे को एक्ट अगेंस्ट ताकू प्रोसेस करा जाय से होची जजेस इंक्वायरी एक्ट मन रखतिबे कारण कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी प्रकार मेथोडोलॉजी प्रूव करा जाय नै केवल लिखा गला कोन कि ए जज कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आपनकर प्रूव्ड इनकैपेसिटी इन द सेंस तांकर प्रोफेशनल ये रे से वैलिड नहंती और फिट नहंती और मिसबिहेवियर इन द सेंस कि जदी मिसबिहेव करूचंदी काहा को से ग्राउंड बट कोगळी भाव रे हेबे लोकसभा ना राज्यसभा ए सब किछि मेंशन नाही तनो ये क्वेश्चन आपनकर आसी पारे तब टिके केयरफुल रहबे तो बट कोठी मेंशन अछि से डिटेल जजेस इंक्वायरी एक्ट रे इट्स फाइंडिंग्स विल डिटरमिन वेदर रिमूवल प्रोसीडिंग्स कैन बी परस्यूड इन द पार्लियामेंट okay now coming to this part removal of a judge in India constitutional basis kono governed by the article 124 clause 4 124 clause 5 for the Supreme Court judges and 217 read 124 of the High Court judge removal only on the grounds of proved misbehavior and incapacity these are the two fundamental grounds on this जोटा कि judges को remove कर दे पारिबे तनो ई मन रखिबे जिनसडा कना क्वेश्चन आसी पारे प्रीलिम्स रे स्टेप वाइज प्रोसीजर जे देखिए प्रथम कोन मु जेमति कहली आपन को प्रथम गोटे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी हला जुडिशियरी तरफ सेठी केही भी ना एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेटिव केही भी नथिले तो से माने किछि सब्सटेंशियल एविडेंस पाइले कि किछि जिंस इन्वॉल्व अछि दैट मींस समथिंग इज देयर सो फर्दर इंक्वायरी इज बीइंग नीडेड ओके तो सेही ग्राउंड रे सेही रिपोर्ट रे आपन करो लोकसभा एवं राज्यसभा रे सेठी रिजोल्यूशन पास करा गला लोकसभा signed by 100 MPs राज्यसभा 50 MPs आपण जानिथिबे जगदीश धनकर जे आपनकर वाइस प्रेसिडेंट थिले ही वाज रिजाइन्ड से काहे के रिजाइन कोले ना कोआ जाउची कि ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन ओनली बिकॉज़ he accepted the resolution which was presented by the 50 MPs of Justice Verma case तो से के पई से को तांको रिजाइन दबा को पड़ितला so admission motion देखो तो notice is submitted to the speaker of the Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha they may admit or reject the motion ये गोटे आपनकर जिंस देखिबा को मिले they admit or reject the motion ये गोटे discretionary authority कहा पकर अछि speaker Lok Sabha and the chairman of the Rajya Sabha ये होछि तांकर discretionary power constitution of inquiry committee if admitted जदि admit हे गला ये 3 member committee is formed under the Judges Inquiry Act comprising a Supreme Court judge Chief Justice of a High Court and its distinguished jurist. And jehetu again it's a matter of judiciary
जो 3 मेंबर कमिटी पुणी थोड़ा फॉर्म करा जिवो से होचंदी सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट. ओके, नाउ मन रखिथे इनिशियल जुडिशियरी गोटे ताकर इंटरनल कमिटी देखिला. वर्तमान एटा पूरा ओपन कमिटी जोटा कि पार्लियामेंट फॉर्म करूछ. द कमिटी इन्वेस्टिगेट्स चार्जेस. इफ चार्जेस नॉट प्रूव्ड प्रोसेस एंड्स. सरला किछ नै प्रॉब्लम. जदि चार्जेस प्रूव हला रिपोर्ट सबमिटेड टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट्री अप्रूवल कोन ना स्पेशल मेजॉरिटी. बोथ द हाउसेस मस्ट पास द मोशन with majority of total membership and 2/3 members present and voting. Okay, majority of the total membership and 2/3 members present and voting. These are the two substantial ground जो केसेस रे आपनकर पार्लियामेंटरी अप्रूवल देखिबा को मिले. ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट. आफ्टर पार्लियामेंट passes the motion, the president issues the removal order. Judge stands removed from the office. Okay, after parliament passes the motion, the president issues the removal order. बाकी जज को बाहर कर दिया जिवो. that means removal हे जिवो. बट एडी गोटे क्वेश्चन होची आजि पर्यंत ये एटा भी देखिबे स्पेशल मेजॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाई नाही कि गोटे जजेस रिमूव पाई वी नीड ए स्पेशल मेजॉरिटी. कोड लिखा है जजेस इंक्वायरी एक्ट. ओके, अच्छा आ गोटे जन मन रखते आजि पर्यंत कोनोसी जज को रिमूव करा जाय नाही ऑफिशियली. जहा अगेंस्ट एलिगेशन आछन ईदर से रिजाइन करिसथि. ओके, मैक्सिमम केस रे रिजाइन हेची और प्रूव हे पारि नाही. चार्जेस आर नॉट प्रूव्ड. बट जस्टिस वर्मा वुड बी द फर्स्ट पर्सन ही पारंती कारण जस्टिस वर्मा हैव बीन आस्क्ड टू रिजाइन. ऑलरेडी तांको कुआ जाई छै भाई रिजाइन कर दियो काहे कि जुडिशियरी ना रे गोटे कलंक नी कि आपण आसुचंदी. बट ही डिनाइड टू डू सो एवं ही चैलेंज द इनिशियल प्रोसीडिंग्स बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि विदाउट जोटा को ना एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो ये चैलेंज करूचंती रादर देन चैलेंजिंग द इनिशियल इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ कोन रिजाइनिंग. तो ये जो जिनसटी आपण करो छी ये दिस वुड बी द फर्स्ट जज जे कि रिमूव हबार चांसेस बहुत अछि अधिक. तो आफ्टर रिमूवल हेले आपनकर सिंपल जिंस आपण देख गोटे जो आपण देखिते ऑफिसर माने कोन होचंदी करप्शन केसेस रे अछन सस्पेंड करा जाउची. रिमूवल केसेस रे तो हमर नाही एथरे कोथरे ब्यूरोक्रेसी रे आपण देखु नथिबे. बट पोस्ट रिटायरमेंट अछि तांको रिटायरमेंट कर दियो छी. रिमूवल रे भी एक्जेक्टली सेम थी जेमति तांकर सैलरी पाइबा कथा सैलरी तो मिलिबनी पेंशन पाइबा कथा से तो मिलिब. ओके, किंतु रिमूवल आपण को कर दियो. रिमूवल इज समथिंग वेरी आपण माने गोटे ब्लैक स्पॉट आपण कहि परन ऑन योर करियर तांकर अछि. प्लस आपन देखिए जजेस माने पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट भी काफी अधिक था कि एनजीटी रा मेंबर कि ह्यूमन राइट्स कमिशन रा मेंबर कि लोकायुक्त रा मेंबर. देयर आर मल्टीपल सच एजेंसी जोटी कि जजेस मानकर रिक्वायरमेंट अछि. एंड इफ देयर इज ए ब्लैक स्पॉट ऑन योर करियर एंड ए पर्सन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस तो ऑब्वियसली तार इन फ्यूचर जो पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट गुडी को सेते भलो देखिबा को मिले नाही. एंड इट्स ए प्रेस्टिजियस वन. जज हमें कहीं कि जज से या जुडिशियरी को कहीं कि आम सब जते भी आपन देखिबे जो नॉर्मल आम देखिबे विल सी इन द कोर्ट कारण कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी जोठी कि हमको जस्टिस मिले. एंड जदि कोर्ट रे ई टाइप रो करप्शन जंदी जुडिशियरी जो चैप्टर डी से रखि दैछन करप्शन इन जुडिशियरी तांको कहीं कि हटै दिया जाउछ. हटै जबार रीजन होचे से कि कोर्ट को जो नजर रे हमें देखुचे वर्तमान किछि वर्ष हलानी कोर्ट रो जो जजमेंट आसुची आपण देखिबे जज माने रिजाइन कले इमीडिएटली इलेक्शन कंटेस्ट करूचंदी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करी. दैट मीन्स व्हाट त माने होची कि जज को या पूर्व जहां भी जजमेंट थिला बोध हुए इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. आपण देखिथिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तळे थिले आपनकर चंद्रचूड़ तांको घरे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाई के पहुंचतले. सो कहा गला कि इट्स ए ब्रेक ऑफ द प्रोटोकॉल. डेफिनेटली इट्स नॉट आपण देखिबे नॉर्मल जो सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज माने अछंती दे डू नॉट गो टू ए पब्लिक फंक्शन. They do not go to a public gathering. The reason कौन ना जज इज समथिंग which conceived कारण आपण जदि गोटे सपोज गोटे नेता मंत्री मानक फंक्शन में जाके पहुंचुचंदी that means you have a strong affiliation to that person and once a person is having affiliation to that a judge then definitely आपण कोन करबे जजमेंट को मैनिपुलेट करि परन. सपोज
गोटे केस आसला से नेता मंत्री को आप अप्रोच कले तो ओबियसली आप जानते नेता को अप्रोच कले जज कर जजमेंट मो प्रति बदल जीव तेणु ये जो जिनस को गोटे फेयर सिस्टम रखापी देयर इज ए प्रोटोकॉल ओके तेणु ये भी सेम थी से टाइप जिनस जदि आप डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रे जदि एमती देखुं देन ओबियसली हायर कोर्ट रे तो आहरी रहिबो तेणु से प्राइम मिनिस्टर जो जॉइन कले पूजा होता सीजेआई घरे सो ओबियसली प्राइम मिनिस्टर वाज क्रिटिसाइज्ड एंड चंद्रचूड़ आप देखिए क्वेश्चन पचर व्हाई प्राइम मिनिस्टर डिड जॉइन टू यू इन दैट पर्टिकुलर पूजा एट योर होम तो ये सब जिन देखी डिस्कसन चलूला एनीवे नेक्स्ट टू the expert committee on Arabali, top court 6 name for expert committee to define the Arabali. The Supreme Court of India asked the Environment Ministry and stakeholders to just suggest names of domain expert for a panel to redefine the Arabalis and ranges. Court emphasized that only lawful mining would be permitted in a Arabali region. आप जानते हैं Arabali को नहीं कि almost आपनकर जो protest strike जो टाइप रो चले थिला सो बेसिकली कौन 100 मीटर वाला डेफिनेशन आप मन पकई दूची टिके 100 मीटर वाला डेफिनेशन हो जो आराबलिटी 100 मीटर थिबो सेटा आराबली रे कंसीडर करा जिवो लेस देन 100 मीटर वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन आराबली एंड माइनिंग वुड बी अलाउड ये जो डेफिनेशन टी दी दिया गला डेफिनेशन रे जदी आपण देखिबे 90% ऑफ द आराबली रीजन आपनकर आसी जाउची सब 100 मीटर या लेस देन 100 मीटर तेणु सेहि पई आपनकर स्ट्राइक प्रोटेस्ट हेतिला कि आराबली हो जोटे डेन्यूड hill ranges that means गोटे plateau kind of region denuded already से क्षय ही सालानी तेणु जेहेतु क्षय ही सालानी तो you can't expect that every Aravalli ranges would be of 100 meter तेणु 100 मीटर कम सेटा सब 100 मीटर जदि सब 100 मीटर आपण देखुछन ता माने आरावली रो पूरा इकोसिस्टम को आपण डिस्ट्रॉय करबा को चाहउछन जदि आरावली रो पूरा इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करा जिवो व्हाट अबाउट द दिल्ली राजस्थान पंजाब सिटी डेजर्टिफिकेशन हवा स्टार्ट हबो the kind of air pollution हवा स्टार्ट हबो जोटा कि ऑलरेडी ओवरबर्डन इन द नॉर्दर्न इंडिया ये सब एंड आरावली रो गोटे बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम अछि अपन थर डेजर्ट को से कोन करूची प्रिवेंट करूची फॉर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन रे तो ये सब जिनस को आखिया कर रखी सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड विद द माइनिंग एक्टिविटीज इन द आरावली रीजन तेणु सेति पई कोआ गला कि व्हेन आरावली committee was formed it was not given equal representation to the domain expert. That was the reason Supreme Court decided to halt the existing committee and suggested a new committee or directed the government to form a new committee which will consist all those stakeholders. In fact, the domain expert mane rahibe jo mane ecological scientist या environmental scientist अछन. The bench was headed by the Supreme Court along with the justices Joymala Bagchi and Biful M. Panchoi. November 20, the court had accepted a uniform definition of Arabali which triggered public and environmental concern. Okay. Due to backlash, the court kept its direction in abeyance in December 29 and halted all mining activities. The stay on mining has been extended for the time being until a scientific definition is finalized. Until a scientific definition is finalized, जे पर्यंत गोटे साइंटिफिक डेफिनेशन आसीनी से पर्यंत को आगला कि नहीं आरावली रे आपनकर कोनोसी माइनिंग एक्टिविटीज हबो नै अच्छा मो आपन केटी कहि रखे आरावली रे माइनिंग एक्टिविटीज पई व्हाई द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड बिकॉज क्रिटिकल मिनरल गुडी को आरावली रे अछि व्हिच विल बी यूज्ड इन द सेमीकंडक्टर आपनकर जो डिजिटल डिवाइसेस माइक्रोचिप आपन देखुचंदी डिफेंस सेक्टर आपन देखुचंदी ई सबु जगह रे आपनकर क्रिटिकल मिनरल्स गुडी को यूज हो. So the companies, the MNCs are simply waiting like a vulture to grab those critical minerals and use as a raw material in their company. So objective to ensure ecological protection while permitting only legal compliant mining. Significance: the Aravallis act as a natural barrier against desertification, protect groundwater, regulate regional climate, hence require strict conservation. The proposed expert panel will likely use scientific, geological and ecological criteria to define the Aravalli ecosystem boundaries. Now coming to this online platform to take responsibility. Ashwini Vaishnav, the IT Minister, has suggested कि जो आपण देखिबे गोटे ड्राफ्ट आपनकर आसीतला प्रपोजल आसीतला ऑनलाइन कंटेंट को नहीं कहा गला कि एक तो सेलिब्रिटीज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज माने दे आर सिंपली अप्रोचिंग द कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनालिटी प्रोटेक्ट माने कोन से मानकर अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस वॉइस
सेमानकर स्टाइल ई सब जिनस गुड़ी को सेमाने प्रोटेक्ट करने को चाहते बिकॉज सेमानकर पर्सनालिटी फिजिकल अपीयरेंस स्टाइल एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड थ्रू एआई इन डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सो ऑब्सीन कंटेंट भी क्रिएट करा जाउची एंड सम अदर जमती अमिताभ बच्चन वॉइस रे आपण कॉल करके पैसा मागुचंद कि डोनेट करो तो ये सब जिनस को मिसयूज जमती न हो से दे आर सिंपली अप्रोचिंग टू द कोर्ट नंबर 1 नंबर 2 देयर आर मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट आपण देखिबे से इंस्टाग्राम रे हो फेसबुक हो ऑन द नेम ऑफ दिस सेलिब्रिटीज ओके या फेक आईडीज ये सब गुडी को होची एंड दे आर अपलोडिंग कंटेंट व्हिच आर मिसलीडिंग वीडियोज व्हिच आर मिसलीडिंग कि गोटे कम्युनल राइट रो पके देला हिंदू मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन ये सब कम्युनल राइट रो इंस्टिगेट करूची ओके र्यूमर स्प्रेड करूची तो सेति पई कोआ जाउची कि एआई जनरेटेड जिंस को सेठी ऑब्वियसली गोटे टैग या लेबलिंग सहित आसीबा दरकार दिस इज एआई जनरेटेड बी केयरफुल और जहाँ भी आपनकर सेठी रही तो प्लेटफॉर्म मस्ट एक्ट प्रोएक्टिवली अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड इंश्योर ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ सिटीजन स्पेशली द चिल्ड्रन तेणु ये प्लेटफॉर्म रिस्पांसिबिलिटी जो जन वीडियो अपलोड करुच्ची प्लीज वेरीफाई कि दैट वीडियो इज एआई जनरेटेड और दैट इज रियल कारण कॉपीराइट तो आप कर दौरान तो कॉपीराइट जदि आप करूँ ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने कारण से मोनेटाइज आपंकर चली तो ये आप एआई जनरेटेड कहीं करें वेदर दैट वीडियो इज रियल और फेक कहीं करें बिकॉज आप देखिए अफगानिस्तान रे गोटे इवेंट सपोज किए क्या रिलीजियस पर्जिक्यूशन होती बांग्लादेश रिलीजियस पर्जिक्यूशन होती पाकिस्तान रिलीजियस पर्जिक्यूशन होती या 10 वर्ष तले रिलीजियस पर्जिक्यूशन होती आप यूपी रे चलाउछन तो ओबीसीटी कौन है जदि कम्युनल टेंशन टी थिला कम्युनल भायोलेंस को इंस्टिगेट से कला तेणु ये जिनस को कंट्रोल कर रिस्पांसिबिलिटी कहार ओबियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइट सो हाइलाइटेड थ्रेड्स डीप फेक synthetically generated content large scale disinformation affecting democratic institution platforms should ensure content based use of a person's face voice or identity in AI generated content emphasize need to curb illegal harmful or crime inciting content given its rapid virality okay तेणु ये कौन करुच्ची इलीगल हार्मफुल एंड क्राइम इनसाइटिंग कंटेंट ही होउछ जेमति कहले आपन को कम्युनल टेंशन वन दैट नॉन अडेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स कुड लीड टू लीगली अकाउंटेबिलिटी ए खाली भाषण तो देले हबो नाही वी नीड टू ब्रिंग ए पर्टिकुलर लॉ जदि लॉ हमर अछि तबे किछि प्रॉब्लम नाही आपन को कहबा भी दरकार नाही दे वुड कंप्लाई दोस लॉ यदि लॉ नाही डेफिनेटली एठी आपन को प्रॉपर्ली गोटे लॉ आनिबा को पड़िबो कॉल्ड फॉर फेयर रेवेन्यू शेयरिंग विथ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर including conventional media, journalist, influencer, researcher, etc. Revenue sharing भी obviously से already से माने काम करूँ तो आपरे stated that a voluntary compliance fails legal measures as adopted in some countries may be considered. Obviously अपन को consider करीबा को ही पड़ेगा legal compliance को. So remarks were made in the conclave of the Digital News Publisher Association. Overall focus platform accountability, online safety, authenticity of news and equitable digital economy is the idea. तेणु एठी आपण जदि गोटे आंसर आपण को आसुची क्वेश्चन ऑनलाइन या डिजिटल मोड को नहीं इंटरनल सिक्योरिटी इश्यू को नहीं सेठी आपण लिखिबे रिकमेंडेशन कि एटा हमें रिकमेंड करूछु कि दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ नो न्यू जीडीपी डेटा set to capture economy more accurately. The new national account series base year 22-23 summary points यदि अपन देखिए India to release new national account series with a methodological and statistical upgrade more accurate GDP एवं GVA estimate अपन कहि परिबे गोटे जिनस म अपन कहि रखे एठी GDP और GVA भीतर कोन डिफरेंस एटा उठके जानिया पे चेष्टा करियो ये GDP कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GVA कोन GVA होची ग्रॉस वैल्यू एडेड ये ग्रॉस वैल्यू एडेड जितेबाला मैं कैलकुलेट करूचे मन रखिथे आपन देखिबे सर्वे हो बजेट हो से माने जीबीए विषय डिस्कस करते जीबीए सिंपल कोन ना फाइनल माइनस इंटरमीडिएट एति की होची जिंस सपोज आपन गोटे ब्रेड बनैले जोटा कि फाइनल आउटपुट इंटरमीडिएट आउटपुट कोन व्हीट फ्लोर थिबो सो व्हीट फ्लोर रो प्राइस को आपन माइनस करिवे ब्रेड अच्छा आपन कहबे सर जीडीपी रे भी जितेबाला मैं कैलकुलेट करूछु हम केवल फाइनल आउटपुट को करूछु दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जीबीए को एथि गोटे आमे जितेबाला जीडीपी रे कोन करूछि केवल फाइनल आउटपुट को ही कैलकुलेट करूछि फ्रॉम द डिमांड साइड किंतु जदि आमे जीबीए को देखिबा आमे दुईटी डेटा को अलग अलग करिके देखि परिबा कि कंज्यूमर साइड रे केते अछि
प्रोड्यूसर साइड रे केते अछि कारण आमे इंटरमीडिएट को भी कैलकुलेट करूचे आमे फाइनल प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट करूचे तेणु सेति पय को आ जाय जीडीपी और जीबीए भीतर गोटे बड़ डिफरेंस होची जीडीपी मेजर्स फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव गोटे फाइनल आउटपुट को नहीं कि जीबीए इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द सप्लायर साइड रे आपण मते कहिबे सर सप्लायर साइड रे केमती हला ना मु आपण को कहि परिबी कि केते व्हीट फ्लोर प्रोड्यूस हेची सेटा मु जीबीए रे जानि परिबी जीबीए रे जानि देबी एंड जीबीए रे सबटु बेस्ट पार्ट होची कोन आमे जतबेले जीडीपी कैलकुलेट करूचे जदि जीबीए प्रोसेस रे आमे कलु आमे सबु सेक्टर को इंडिविजुअली माने सेग्रीगेट करूचे एंड सबु सब सेक्टर रो इंडिविजुअल आउटपुट को भी बाहर करूचे एंड से इंडिविजुअल आउटपुट को ही आमे कहूचे केते प्रोडक्शन हेची कारण जतबेले जीडीपी आमे कैलकुलेट करू एटा गोटे मार्केट प्राइस रे पळे आसे मार्केट प्राइस जोटा कि फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर जो प्राइस रे किणुची मार्केट रो बट जदि जीबीए आपण देखिबे ये होची आपनकर सप्लायर साइड रो एंड प्रोड्यूसर केते प्रोड्यूस कला से जिंसु को हमें देखो बेस ईयर रिवाइज्ड 11-12 आगरो थिला बर्तन 22-23 हिची इंप्रूविंग रेलेवेंस टू द करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन आपण देखिबे इन्फ्लेशन को हमें 2024 को नहीं चुकण बेस ईयर वर्तमान आगुरु 12 थिला 24 को नंबर कौन रीजन थिला ना मु आगुरु भी डिस्कस करिची बहुत गुडे गुड्स एंड सर्विसेज थिला जोटे कि ऐड ही नथिला या जेमती एबे डिजिटल सर्विसेज हमें बहुत अधिक कंज्यूम करूछु ए जिंस 2012 रे सेते नथिला तेणु कंजप्शन बास्केट गोटे चेंजेस आसी से चेंजेस को रिफ्लेक्ट करबा पई हमें 24 को अपडेट कलु मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट सब कमिटी तो ये 11-12 22-23 रो जो कंपैरिजन अछि सेटा हमको बेस ईयर रिवाइज करके हमको देखिबा को मिले यस सीपीआई रो 2024 सीपीआई रो ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट methodological improvement private corporate sector activity wise revenue share will be used to allocate GBA across sector instead of assigning the entire company output to the dominant sector ये माने कौन ये माने होची सबसे से देखो इधर कौन से कंफ्यूजन हवार नहीं नेशनल इनकम को काउंट करबा पई से माने नेले 22-23 को इन्फ्लेशन को काउंट करबा पई से माने नेले 24 को तो इधर कंफ्यूजन काहेंगे होचंदे आपण कारण बाय नेशनल इनकम आउ सीपीआई भितर बहुत बड़ डिफरेंस अछि सीपीआई कौन मेजर करूची आपनकर प्राइस लेवल को मेजर करूची ये नेशनल इनकम रे कौन होची आमे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होची आमे ताको मेजर करूचे तो सेठी गोटे रे प्राइस लेवल आउट होची केवल गुड्स एंड सर्विसेज को एवं फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो एथर किछि कंफ्यूजन हवर नै तेनु एमाने कोन करूचंदी नेशनल इनकम वाला या नेशनल इनकम कौन करूची केवल आउटपुट को देखुची से गुड्स हो किबा सर्विसेज तो से पे माने 22-23 रखले से माने 24 रखले किछि प्रॉब्लम नै तो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आगुरु 2012 सीरीज रे जति आपण देखिबे ताकू कंपनी एज ए होल आमे देखुतलु जोटा जो कंपनीज गुडी का बड़ बड़ कंपनीज लार्ज कंपनीज जो गुडी का डोमिनेंट थिबो केवल सेही गुडी को कंसीडर करा जाउतला वर्तमान आमे जीबीए सीरीज रे आमे जो स्मॉल स्केल रो आरंभ करके लार्ज सेक्टर पर्यंत ताकू इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करके देखिबा जनरल गवर्नमेंट सेक्टर inclusion of value housing services provided to government employees enhancing accuracy of the government output estimation तो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर अपन देखिबे गवर्नमेंट रो रोल काफी बड़ी बड़ी चली इन डिफरेंट सेक्टर सो वेलफेयर स्कीम्स माध्यम रे हो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट माध्यम रे हो बेसिक सर्विसेज अमेनिटीज टू द हाउस होल्ड को नेकी हो से केस रे भी हमें कैलकुलेट करबा एंड एक्सपैंडेड कवरेज ऑफ द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एंड लोकल बॉडीज इन द गवर्नमेंट सेक्टर एस्टिमेट हाउस होल्ड सेक्टर इंप्रूवमेंट्स annual use of annual survey of unincorporated sector enterprises and periodic labor force survey direct yearly estimation of household sector output instead of extrapolation private final consumption expenditure to be estimated more granularly using household consumer expenditure survey and production and administrative data sources तो household sector improvement केमती हो जदि household consumer expenditure survey हमके देखिबा ओके ये होची फर्स्ट जिंस हाउसहोल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हमको कौन डेटा देबो ना कंजप्शन पैटर्न कोन अछि हाउसहोल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हमको कौन कहबो ना कंजप्शन पैटर्न कोन अछि सेति पई हमें नुवा सीपीआई इंडेक्स नै कि आसीछु एंड ये जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपण देखिबे ये काफी चेंजेस हेछि जोटा हमें इन्फ्लेशन रे भी डिस्कस करथुलो ओके तेनु नुवा नुवा प्रोडक्ट आपण को इंट्रोड्यूस हेछि नुवा नुवा सर्विसेज आपण को आसीछि तेनु सेति पई नुवा जो सीरीज बेस ईयर हमरो निहाती दरकार
use of new and enhanced data sources, GST data to be used more exclusively. सतरे आपनकर जीएसटी आसिले तेणु जीएसटी बर्तन आसीगले बेटर एस्टिमेशन ऑफ रीजनल आउटपुट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, improved measurement of value added private companies and identification of active and non reporting firms. आपण सिंपली गोटे देखिए एक तो जीएसटी डेटा में इंक्लूड करबा ओके ओके स्लाइड हेडलाइन मिसमैच हो गला ना ओके ठीक अच्छा अच्छा कॉपी है सॉरी ठीक अच्छे एटा चेंज करके अपन को दे देबे एनीवे आपण देखिए आउटे जिनस मु आपन कहबी जो आपनकर जीएसटी डेटा तो गोटे जिनस रहला आपण देखिए आगुरु बहुत गुडे सर्विसेस अछि से जिनस गुडी को आपनकर नथिला कोन मोनेटाइज हेई नथिला एबे देखिए सिंपल मु आपन को गोटे एग्जांपल दोछि केयर इकोनॉमी रे 2012 रे जो केयर इकोनॉमी थिला आज तार साइज बढ़ी सपोज आम 24 को कंपेयर करबा 22-23 को कंपेयर करबा यार माने कौन आप देखो सिंपली केयर इकोनॉमी कौन कहूँ केयर इकोनॉमी रे पॉलिसी मेकर कहउछंती गोटे महिला जदि से पूरा कंप्लीट हाउस होल्ड काम करूछंती तांकर कंट्रीब्यूशन जीडीपी रे ऐड होनी तेणु से आम कौन करबा तांको घरे आउ जण को अपॉइंटमेंट करबा तांको कहबा तमे जाई कि सर्विस करो जॉब करो बुझी पड़छन मो कथाडा तेणु जो हाउस होल्ड वर्क रे सी एंगेज थिले एंड दैट वाज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड इन जीडीपी बर्तमान तो कैलकुलेट हम कारण सम अदर पर्सन इज कमिंग टू हर हाउस होल्ड एंड से तार काम करें मेड कुक जहाँ भी आप कहे एंड दिस इंडिविजुअल इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द आपंकर ऑफिस हो कि सर्विस जॉब तेणु ओबियसली केयर इकोनॉमी साइज भी आप देखिए बढ़ी बढ़ी चली ड्यू टू मोर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज आप कहे राइट तेणु ये सब जो चेंजेस इवॉल्व अक्रॉस द इयर्स ताको मध्य आम इंक्लूड करबा ये आपनकर जीडीपी कैलकुलेशन है नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर एस्टिमेशन मध्य यूज ऑफ आरबीआई स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया फॉर बैंकिंग एक्टिविटी एस्टिमेशन रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्रॉक्सी बेस्ड एनबीएफसीज विथ एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ओके तेणु फाइनेंशियल सर्विसेस भी बढ़ी आप देखिए मोस्टली द फिनटेक कंपनीज से माने ग्रो करिसें आपण जो एनबीएफसीज गुडी को देखुचंदी आज आप पेटीएम देखुचंदी किंबा आपनकर मोबीक्विक देखुचंदी जो बहुत गुडे प्लेटफॉर्म अच्छी जो पेमेंट जदि आप स्टडीआईक्यू रो पेमेंट गेटवे को जाके पहुंचे से 5-6 टका पेमेंट गेटवे थी जो मैंने ब्रोकर और मिडिल मैन हिसाब से आपन पेमेंट नौचंदी स्टडीआईक्यू को पेमेंट करूचन तो से माने भी फिनटेक हिसाब से ऑपरेट करूचन ओके यस मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्टल टू अट्रैक्ट टेक इनोवेशन रेलवे मिनिस्टर announces portal to attract innovation Ashwini Vaishnav to promote innovation and startup participation in the railways तेणु गोटे स्पेशल पोर्टल डेवलप करा जिवो शिफ्ट फ्रॉम रिजिड वेंडर स्पेसिफिकेशन प्रोक्योरमेंट टू एन इनोवेशन ड्रिवन ट्रायल एंड अडॉप्शन फ्रेमवर्क की फीचर्स देखिए क्रिएशन ऑफ ए डेडिकेटेड इनोवेशन पोर्टल फॉर ओपन सबमिशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रपोजल बाय स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स financial support railways to fund up to 50% of the development cost for the selected solution and long term bulk procurement तो रेलवे रे वर्तमान इनोवेशन पाई आम स्टार्टअप या नुआ नुआ इनोवेशन आइडियाज को इनवाइट करूचे जोटा कि 50% फंडिंग आपन को रेलवे करिवो एआई पावर्ड एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एआई बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम ड्रोन बेस्ड ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम rail stress monitoring system, sensor-based load calculation devices, solar panel integration and coaches for green energy adoption, AI-enabled coach cleaning monitoring system. Encourages startup ecosystem integration with rail infrastructure, AI, drone, sensor, green tech, safety, efficiency, sustainability, predictive maintenance, technological modernization and make in India innovation. These are the significances. MCQs देखिए The inquiry committee constituted by the Lok Sabha Speaker to examine removal proceedings relates to which judge, that is Justice Yashwant Verma. The new series of national accounts will update the base year, that is 22 and 23. Upcoming GDP series will significantly improve accuracy by the incorporating which major new data source, that is GST. The newly announced rail tech policy aims to attract innovator startup primarily through
Yes, a dedicated innovation portal with funding support up to 50%. These are the two main questions जोटा कि लिखिबे एवं मन रखंतु जो माने चाहउचंती फ्री टेस्ट दवा पई हम एप्लीकेशन को जॉइन कर दी परिबे एवं फाउंडेशन कोर्स रे एनरोल करबा पई मात्र 13999 रे प्लैटिनम बैच आपण पाई जिबे जोटा नॉर्मल टाइम रे आपण को आसे 19000 पावर प्ले कोड यूज करबे जे इन लाइव पावर प्ले आपण को चली छी 50% ऑफ रे आपण को मिल जिवो ओके एंड पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रे मध्य मिल जिवो थैंक यू।